शहर के डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान विद्यालय की वार्षिक गतिविधियों और उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त आईपीएस अनिल कुमार राव, वाइस चेयरमैन आर.के. सेठी और प्राचार्य राजदीप कुलश्रेष्ठ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में किंडरगार्टन से कक्षा 5वीं तक के छात्रों ने अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अपनी सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से भावी युवा पीढ़ी को अपने से बड़ों का सम्मान करने का संदेश दिया। नन्हे कलाकारों का प्रदर्शन सबको मोह रहा था। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। अनिल राव और आर.के. सेठी ने शिक्षा के साथ ही खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां में भागीदारी के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया। हरियाणवी, अरेबियन, मराठी, गुजराती और पंजाबी नृत्य के माध्यम से विद्यार्थियों ने विभिन्नता में एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा नेता दिनेश कौशिक, सत्यप्रकाश छिकारा, महिपाल गुलिया, चांदीराम, अंजू अग्रवाल, जयपाल दहिया, विजेंद्र खोखर, ब्रह्मजीत छिकारा आदि उपस्थित रहे। Regularly, we have just approaches up to this 2425, and this was not possible without your support and my dedicated, hard-working team of DAV Bahadurgarh, all the teachers, staff members, in charges, and even non-teaching department and non-teaching employees also put their best effort to reach up to this stage so far. Academic part, although so many long list is there for the achievement, the subject-wise toppers was there, and this year we have 199 in subject, due to which this percentage was there. And besides this one achievement, DAV calculate the QPI, which is known as Qualitative Performance Index. And that rises from 70% to 77 at 12th standard. That shows the average marks of all the students so far. And the highlights of the result, if we consider, that is 90% and above 26 students, 75% and above 110 students, and 60% and above 163 students out of 172 students, all scored first division from this strength. This is really wonderful efforts done by the teachers, and obviously it is also the hard work of parents and the student who score these marks. And to encourage the student and motivate for the academic standard, we always appreciate the effort of merit holders and providing them a scholarship of 3,100 to first topper, 2,100 to second topper, and 1,100 to third topper to score above than 95% so far. Although the academic part is one of the feature of the school, but so many type of curricular activities, some academic excellency part of activities being also conducted, like GK test and Olympia test and other type of music and artistic activity. Beyond that, one child, Karthik Yadav, scored or secured the position in Bharat Ko Jano Pratiyogita at national level. That is one of the achievement for. And recently, Karthik Yadav, Aviral, and Arju and Muskan scored second position in this competition, although Karthik Yadav and Aviral was the first position. And today also they having the national level competition, and they gone for that competition so far along with the parents.